Shifting your career from finance to interior designing and architect, what was the struggle? I was not passionate about finance, so that's why I quit it. I find out something where I was passionate about. That was designing. इस पॉडकास्ट की जो स्पेशल गेस्ट हैं दैट इज नेहा गर्ग मैम. शी इज इनटू द इंटीरियर डिजाइनिंग पार्ट. शी इज द प्रिंसिपल आर्किटेक्ट ऑफ स्टूडियो जैन डिजाइन. वेलकम ऑन द हाउसिंग कार्ड शो मैम. Thank you so very much. कभी सी क्लाइंट ही सेड कि ये प्रोजेक्ट है एंड यू नीड टू क्रिएट दिस. फंड्स का कोई इशू नहीं है. ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं कि फंड्स का कभी इशू ही नहीं है. दिस इज लाइक वन ऑफ द ड्रीम्स काइंड ऑफ थिंग. सबसे महंगा प्रोजेक्ट अब तक आपका कौन सा रहा है? सबसे महंगा प्रोजेक्ट वन विला. डिजिट्स आर वेरी हाई. ओके. So that is the interior 20-30 design crores, 50 crores. सबसे लोएस्ट बजट प्रोजेक्ट जो आपने अब तक हैंडल करा है? I have to decorate for birthday. Okay, those Birthday? were birthdays. अच्छा. Those were my initial projects. मैम ये तो Was बहुत fun. इंटरेस्टिंग बात बताई आपने. सबसे अजीब क्लाइंट रिक्वेस्ट आपको क्या मिली है? सबसे अजीब तो मैं नहीं बोलूँगी, बट दिस हैपन्स मेनी अ टाइम्स. क्लाइंट्स आर वेरी एस्पिरेंट. उनको चाहिए ताजमहल एंड देन वो समझना नहीं चाहते हैं इस बजट में वो चीज़ नहीं बन पाएगी. What is your design philosophy? A space has to be free flowing. किस टाइप की पेंट्स आप यूज करना पसंद करते हो? So paints, Tell us your top 5 residential projects that you have. हेलो गाइज, वेलकम टू द हाउसिंग कार्ड शो. और आज हम हाउसिंग कार्ड का एक स्पेशल एपिसोड शूट कर रहे हैं इन मुंबई, सिटी ऑफ ड्रीम्स, सपनों का शहर. बहुत खूबसूरत इमारतें हैं यहाँ पे, बहुत खूबसूरत आर्किटेक्चर है यहाँ का, और सिटी अपने आप में एक बहुत वेलकमिंग सिटी है, खूबसूरत सिटी है. और आज हमारी इस पॉडकास्ट की जो स्पेशल गेस्ट हैं दैट इज़ नेहा गर्ग मैम. thank you for having me here. Thank you so very much. She is into the interior designing part. She is the principal architect of Studio Jane Designs. And आज हम मैम से बहुत सारी चीज़ों को लेके बात करने वाले हैं. टॉपिक्स into related with interior designing, architecture, her life journey and the projects. बहुत सारे अवार्ड्स मिले, उसके बारे में बात करेंगे. So स्टार्ट करते हैं मैम द पॉडकास्ट. फर्स्टली तो आप देख रहे हो जो व्यू आपके बैकग्राउंड में चल रहा है. सो ये एक शहर ऐसा है दैट ये हर किसी को अपने पास खींचता है, चाहे वो किसी भी फील्ड से हो. सो शुरुआत हम करेंगे इस शहर के आर्किटेक्चर से, इस शहर की कुछ ऐसी इमारतों के साथ में जो आपको ऐसा लगता हो कि बहुत ही खूबसूरती से उनको तराशा गया है, बिल्ड करा गया है. I will rather start with the history of Mumbai. Yeah. When we see the Victorian architecture here, so हम जब साउथ मुंबई को देखते हैं, वहाँ के जो कल्चरल बिल्डिंग्स हैं, the way it's been built up, the kind of materials it has been used, there has been used in that I think that defines Mumbai as the city of dream. And with the kind of the magnus it has, voluminous the volume it has got, I think that makes it all the more luxurious, which applies to every kind of design style when anything is with the scale, with the kind of correct material is being used, which always looks luxurious, and I think that makes it all the more dreamy for everyone. इससे पहले हम पॉडकास्ट की और आगे क्वेश्चंस पे बात करें. सो फर्स्ट आई वुड रिक्वेस्ट यू टू टेल द ऑडियंस दैट स्टूडियो जैन डिज़ाइंस में आप क्या क्या करते हैं, लाइक इन व्हाट सेक्टर्स एंड सेगमेंट्स यू गाइज आर इनटू, और एक कुछ प्रोमिनेंट प्रोजेक्ट्स जो आपने अभी तक करे हैं. देन वी विल डिस्कस द डिटेल्स लेटर ऑन इन द पॉडकास्ट. So Studio Jane Designs, we established 6 years back in 2018, and ever since we have been evolving ourselves a lot. We started with smaller scale residential projects and smaller scale commercial projects when you say the offices and all. But then slowly and gradually we have found out that our forte is not into mass but into class.
So that is why we have started diverting ourselves to very ultra high-end residences, and we are also very much inclined for hospitality industry. So we right now also, apart from pure hospitality projects, we are also doing hybrid projects which are called holiday homes, which is Okay. a mixture of high-end residences and that of your hospitality, and that's kind of a personalized hospitalization, and which is also the trend in India, in fact, all over the world. Holiday So homes. holiday homes, Okay. yes. So it's like Airbnb kind of a thing. Airbnb, there are much Outhouse, higher level outhouse, brands. outhouse, like. There are much higher level brands where people buy villas, and these are huge scale villas, Okay. very high end villas, Okay. which are owned by very affluent society. Yes, yes. And then this is a ever increasing trend in India, or in fact even in the world, when people are having their holiday homes. So they are having a lot of money in their hand. So apart Yes. from their permanent homes, they are having these temporary homes also with them, where they want to spend and unwind themselves whenever they are getting time. So we are a lot into these hospital in this sector of holiday homes. And this is also because we are into since we are into the transition phase, so it's in between of residential on the hospitality. It takes care of both the positive aspects of both the different segments. So this is also one of our forte, and we are doing something very different, which is being catered by only very selective designers. We create experience centers which are based on artificial intelligence, Oh, and wow. these are for some selective corporates, and this is something which involves a lot of technical skills and technical hardwares. And the best part was that we got the opportunity to get into that from one of our clients. So that's our client business to create such solution, and they offered us that, why don't you collaborate? Wow. And the industry always opens up. I mean, collaboration No, is yes, yes, yes. these days is the key for the success. So that is why we are also into such kind of projects, and these are our typologies. नेहा मैम इज़ ऑल्सो अ प्राउड मेंबर ऑफ ट्रिपल आई डी एंड मैं चाहूँगा मैम इसमें लाइक व्हाट इज़ दिस इंस्टीट्यूट ऑल अबाउट और इसके बारे में थोड़ा सा आप और बताइए. Okay, so Triple ID is an institute design. It's created, established for the purpose of, you can say, exchanging of the ideas, for the networking, Okay. for giving some formalized shape to the industry, in design industry. And I am just a member, but then I must say that there's a commendable job done by committee members, and these are very seasoned and the learned designers and architects who head the institute. There's a set of people who head the institute, and with their multiple number of years of experience, they know that what as an industry we have the limitations, or we have the advantages with us. And they work upon those. They create multiple events where we get an opportunity to network, opportunity to learn, to expand ourselves, to collaborate, and to explore multiple gamuts. So that is how Triple ID is a big contributor in our industry. So approximately how many members would be there in Triple ID? Frankly speaking, I'm not sure with the numbers, but then it is opened for all, Okay. including students, including vendors, including designers, architects. Anybody who is related to the industry can be the part of this institute, and can have the good opportunities for them. So this will also be helping out people who are into interior design and architect for networking purposes as well. Yes. Yeah. It provides a lot of opportunities for networking. So I would like you to tell us your top 5 residential projects that you have as per you. Okay. Yeah. So, though we are based out of Bombay, but then majority of our projects are across the country. Yes, yes. And as I mentioned, I'm into hospitality industry. I'm also getting into because of that, there is a transition project what we are doing, which are called villas. So we are doing few multi-acres villas in Goa. Goa. Okay. Yes. And then there is another project which is
which is quite a statement design what we have created. That's in Delhi. Okay. Yes, and there is another one what we have done in Raipur. So Raipur. apart from Mumbai, though we have done, I think all the projects are like my baby, but these are few projects which I'll say that has given a remarkable effect, a remarkable impact on the industry. Commercial projects, any of your top 3 or 5 commercial projects? Yes. So we have done artificial intelligence based experience center for one of the corporates. I cannot name it because of the NDA reasons. Not an issue. That is one. Then we have also we are doing right now one of the boutique resort that's in Karjat, and yes, there is another office in Bombay. What we have done, so that's like these are few remarkable projects from our side. And your core expertise in the field of hospitality, your 3 to 5 projects in the hospitality industry. Okay, so as I said, I mean, it's a transition which is happening. So I'm quite newer in the industry when it says the hospitality, but I believe the principle goes more or less similar, whether it's a residential or a commercial or the hospitality industry. So, but the thing is, yes, some kind of personalization, some kind of expertise you require from segment to segment. So, of course, there is some kind of expertise is required for the hospitality as well. But then, all my hospitality is at the transition level. We still haven't converted because these are longer term projects, and it's just been 2 years after the COVID when we started getting into the hospitality. So, I do not have the numbers, but then this is what is my experience. What is your design philosophy? Like एक basic हर किसी का एक design language होता है. There is a thing that defines your taste and your like for example हम हमेशा बोलते हैं कि अगर कोई बिल्डिंग बनी है ये शायद उन्होंने बनाई है क्योंकि वो दिख रहा है उनके उससे. So anything that you find that this is something that is my signature style or my design language. So I think my philosophy goes one with what is the inspiration of the project. Okay. We have to first understand that what inspired you to do that project. It can be client's requirement, because I think that comes as the first inspiration. What is their requirement? We revolve everything around that. And that's what called the best of the production, when you are making something what is required by the consumer. So that is the first philosophy. Second is that I believe that a space has to be free flowing. Free flowing of any particular typology, any particular style. How we see nature. Nature never defines कि अच्छा इतना कलर ब्लू होना चाहिए, इतना कलर मेरा ग्रीन होना चाहिए और ये मेरा अब ब्राउन चालू होता है. So everything is like so merging, so free flowing. That should be the way we should also be putting our design. It should look very organic. Doesn't matter what colors you are putting, doesn't matter you can what style you are choosing. You can mix multiple styles, you can mix multiple colors, you can mix multiple styles into it. But then it should look all well blend together, and should look very aesthetically appealing. And of course, the most important part is it should be serving the purpose of the space. When was the time जब आपको ऐसा लगा था कि that yes, now it is the time that hit you कि अब मेरे को इंटीरियर डिजाइनिंग में जाना है? वो एक मूवमेंट कुछ क्या था वो? Okay. So very good question. I enjoy this answering this. Because मैं अभी आपको ऑब्जर्व कर रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था that there is a story behind this and I should ask this question. Okay, so you cracked it in fact. I was originally not a designer. I was a finance candidate and I was working as an equity research analyst initially. I served that industry after my post-graduation for almost 4.5 years. But just right from my childhood, I wanted to get into designing. And there was a reason for that, because I was one of the dumbest students. And somehow that made me introvert.
and because of that I started finding my interest or involving myself into some artistic or something very something which is very creative, and then yes, when I started involving into it, the entire interest started generating then. And since my childhood I wanted to get into the designing, but then lately, late in my later years of my education, I got the confidence, I became academically good also. But then because of some backgrounds, family backgrounds, I entered into finance. And but that was never my love. After serving for a few years, I thought of, yes, I'm getting money, but that ikigai moment, that happiness is missing. So then after my marriage, when I shifted to Bombay, it's been 15 years back, when I decided to shift my profession from finance to interior designing. And I got to the zero level. I became student again. Then with my passion, because the passion was there and I was late into the industry. So along with my studies, I was also parallelly working as under some designer so that I can cover up faster. And initially, when I freelancing kiya, I was a new mother also then. There was a new city. So it was quite difficult and longer for me to cover up vis-a-vis other designers who already have some background, some networking or some kind of backup with them. That was lacking at my case. But then no regrets. I think being on the ground level, I am much more technically strong, I would say, than few others and some set of the group. And now I'm serving as a full-time designer. जब आप इंटीरियर डिज़ाइनिंग वाले पार्ट पे आ रहे थे, तो व्हाट काइंड ऑफ वाज द स्ट्रगल बेसिकली? बिकॉज आज जब हम देखते हैं इस जनरेशन में ना, सो दे वांट एवरीथिंग सो क्विक. शिफ्टिंग योर करियर फ्रॉम फाइनेंस टू इंटीरियर डिज़ाइनिंग एंड आर्किटेक्ट, एक प्रॉपर प्रोफेशनल करियर फाइनेंस में एंड एक प्रॉपर अनप्रोफेशनल करियर जिसको रिकॉग्नाइजेबल सेक्टर भी नहीं माना जाता, So true. है ना? तो एंड उसमें भी इतना अमेजिंग काम आज की डेट में आप कर रहे हो, ऑल ओवर इंडिया आपके प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं. सो अगर कोई देखो इसको एज अ स्टोरी दे देता है तो दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, बट जो बैकग्राउंड है वो तो आप ही हो. वो आपको पता है दैट द काइंड ऑफ स्ट्रगल्स, द काइंड ऑफ हार्डशिप्स दैट यू हैव गॉन थ्रू. सो जो आज ऑडियंस आपको सुनेगी इस पॉडकास्ट के माध्यम से, सो स्टूडेंट्स हैं मैम बहुत सारे जो सुनते हैं हमारा पॉडकास्ट ये वाला, उनको क्या सजेशन देना चाहेंगे आप? लाइक द एज अ लेडी, एज अ विमेन, एज अ मदर, है ना, तीनों ही रोल्स आप बखूबी आपने निभाए हैं. सो मैं चाहूँगा कि उस पर थोड़ा सा लाइट, आज उनको बहुत इंसाइटफुल इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है. So I would say there are 3 most important piece. पहला तो आप में पैशन होना चाहिए. अगर आप पैशनेट नहीं हो कि क्या आप काम करने जा रहे हो, तो वो आप उस इंडस्ट्री में अच्छा कर ही नहीं पाओगे. ठीक है. लाइकवाइज व्हाट आई वाज नॉट पैशनेट अबाउट फाइनेंस. आई वाज गुड एट फाइनेंस बट आई वाज नॉट पैशनेट फॉर इट. सो दैट्स व्हाई आई क्विट इट. आई फाइंड आउट समथिंग वेयर आई वाज पैशनेट अबाउट. दैट वाज डिजाइनिंग. सो यू हैव टू बी वेरी पैशनेट. ओके. Second thing, you have to have a lot of patience. Time tests you. Clients test you. Even the laborers test you. So Of course. you have to go through multiple bilkul. tests. A lot of patience has to be required there. And I think that is irrespective of any industry, in all the industry, for all the business people, there is a lot of patience required. Third, a lot of perseverance. There is no substitute for hard work. And hard working along with the smart working, that comes as a best solution. You shouldn't be doing donkey work. When you're doing lot of work, hard work करे जा रहे हो, direction नहीं है साथ में, vision नहीं है सामने आपके, and then things which can smartly happen in 3 hours, you're putting 30 hours into it. That should also not be happening. You shouldn't be going away from doing a lot of hard works, but when hard work is mixed along with smart work, that gives the best solution to your vision and to your solution what you want to give to the client. So these are a few things which are really required. Now talking about what all challenges were there. As a female, I would say, trust me, I mean that hardly makes a difference whether you are male or female. अब तो नहीं I होता, think I think both the clans have their own set of challenges with them.
I mean, even initially, even now, for that matter, it's a very fluid thing. So there is nothing. I do not believe in women power. Like it's. I feel that that's like one buzzword, but it's just like as a person, as a human, as a personality, how strong you are, how you are, how, as I said, that how passionate you are and how hardworking you are. That matters more than a female. It's okay. I have my own set of challenges. When I had a small child, I had to take care of him. And I had the bigger challenge was rather two. A, lack of the correct mentorship. I was not having a mentorship, nor I had some godfather with me. Okay. And Mumbai is a very saturated industry. And now the entire, I think not now Mumbai was ever since it was like that. अब तो मैं देखती हूँ कि इंडिया में इतने सारे शहरों में वही केस है, ठीक है. Everywhere the designers are there. It is very saturated market. And अपनी खुद की पहचान बनाना, okay, और उसमें पैसा कमाना, उसमें सही तरीके से पैसा कमाना, और सिर्फ पैसा भी नहीं कमाना है, आपको अपना नाम भी कमाना है, आपको अच्छी सर्विस भी देनी है, क्लाइंट्स को भी उनके हिसाब से उनका सोल्यूशन देना है, उनको हैप्पी करना है, अपनी खुद की टीम को भी संभालना है, उनके साथ भी चलना. लाइक यू सेड दैट योर टीम इज़ योर फैमिली, माई टीम इज़ ऑल्सो माई फैमिली. उनको भी संभालना है. तो मेरा एक बच्चा नहीं है, मेरे 15 बच्चे हैं. आई ऑलवेज से लाइक दैट. तो दीज रिक्वायर्स a lot of experience. And if there is a hand holding by some experienced person or by godfather, okay, that trust makes the path very easy. I would say that we all should have one mentor with us. That was missing in my case, which was the biggest challenge. And then second thing I would say, networking is very important. Okay. I am into the industry which is lifestyle based industry. Okay, I'm not selling a product. मैं यहाँ पे toothbrush नहीं बेच रही हूँ. Toothbrush can still be the mass consumer product. Okay, I am not selling a table which can be consumed by a mass. Okay, I am creating a solution, and that too with the aspirations to give the solution to the affluents, to the high level clients or the HNIs. Okay, I'm not also aspiring to be a mass designer. I am trying to be a class designer. Okay, for that I need to have the correct networking. करेक्ट नेटवर्किंग के लिए सबसे पहला तो होना चाहिए कि आपका खुद का बैकग्राउंड अफ्लुएंट होना चाहिए, विच वॉज नॉट देयर विद मी व्हेन आई स्टार्टेड 15 years बैक व्हेन आई केम इन मुंबई. वी लिटरली हैड वेरी हम्बल बैकग्राउंड. आई मीन जब हम आए थे हमारे पास वार्डरोब तक नहीं होते थे सामान रखने के लिए, तो वी वर लाइक इन द बॉक्सेस वी वर कीपिंग आवर थिंग्स. सो दैट वॉज द केस. बट देन नेवरदलेस इफ द पैशन इज देयर यू फाइंड आउट योर वे. That passion was there, and then slowly and gradually with the strategic way हर बार एक ऐसा नेटवर्क बनाया कि जिससे नेक्स्ट नेटवर्क मुझे हायर मिला, बड़ा मिला. सो दैट शुड बी द करेक्ट स्ट्रैटेजी, एंड दैट आई फील वॉज द बिगेस्ट चैलेंज. एंड नाउ आई हैव much level have overcome that, and I learned and unlearned many things in this process, which is the most interesting part. आज की जो यूथ है, आज का जो लोग हैं जो इंटीरियर डिज़ाइनिंग एंड आर्किटेक्चर में जो अपना करियर परस्यू कर रहे हैं, सो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि ये लोग नहीं सीखते हैं. दे आर लेस ऑफ इन प्रैक्टिकल इन थिंग्स. दे आर मोर ऑफ टेक पर्सन्स नाउ. टेक्नोलॉजी इज़ गुड, है ना, बट आपका इस पर क्या टेक है? लाइक हाउ डू यू फाइंड दिस थिंग? सो आई वुड से जो आजकल के डिज़ाइनर्स हैं, ऑफ कोर्स थोड़ा सा इम्पेशेंट है, और पेशेंस रखने की ज़रूरत है उनको. ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सिर्फ टेक बेस्ड काम मत करिए. सॉफ्टवेयर इज़ वन ऑफ द वेज टू इम्प्रूव योर स्किल्स. दैट शुडंट बी द बेस ऑफ दैट. द बेस इज़ कि आप ग्राउंड लेवल पे जाके काम करिए, समझिए कि किस तरीके से काम होता है, क्या टेक्निक्स करी जाती हैं, चाहे वो कारपेंटर हो, चाहे वो सिविल हो, या इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग, विच इज़ वेरी टेक्निकल टॉपिक. You should go stand on site, understand that how these gets converted, and which will make your understanding or the grounds very strong, and that will also improve your logical skill set. So if you have good logics,
ट्रस्ट, आधे डिज़ाइन तो वहीं बन जाते हैं. यू बिकम द हाफ सक्सेसफुल डिज़ाइनर then on top of that comes your aesthetics. So it shouldn't be starting, perhaps this starting can be aesthetic when you want to understand the vision of the designer, when you want to understand that vision of the client, or you want to mix it with your vision. Okay, that starts with there, but and it ends there. Okay, everything in between is the logic. So if you can make your logics strong by being on ground, by applying common sense, which is actually not so common. I always say with my people also, apply your common sense, apply your logical skills, and you will be resolving half of the design, that too successfully. मैम पहले के टाइम पे ना घर बहुत बड़े होते थे, जॉइंट फैमिलीज होती थी, बड़े रूम, बड़ी वार्डरोब्स एंड एवरीथिंग. आज के टाइम पे घर छोटे होते जा रहे हैं, फ्लैट्स सिस्टम आ गया. फ्लैट्स में भी अब आज अभी हम जैसे मुंबई में बैठे हैं तो यहाँ बात करें 1 BHK स्टूडियोज़, स्टूडियो में भी इतना कम साइजेस में और इतना सब कुछ आपको प्लान करना होता है. सो देन कम्स पर्सन्स लाइक यू, जो कि हम तो स्पेस दे देते हैं, फिर उसको इतनी खूबसूरती से आप बनाते हो. तो वो स्किल सेट और वो मैनेजमेंट कैसे आता है? As you correctly said the word management, I like that a lot. Thank you. मैनेजमेंट वहीं से चालू होता है जब हम क्लाइंट से फर्स्ट टाइम मिलते हैं. वी क्रिएट अ लिस्ट, व्हाट ऑल आर देयर रिक्वायरमेंट्स, व्हाट इज़ देयर लाइफस्टाइल. लाइफस्टाइल ऑल्सो इंक्लूड्स कि उनको वार्डरोब में अपने जो कपड़े हैं वो वर्टिकल डालने हैं हैंगर्स में, कि उनको स्टैक करके रखना है. दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड वन ऑफ द लाइफस्टाइल. सो वी jot down each and everything from them. There's a proper set questionnaire, which is the part of the management, which is the part of the system, and which is the part of the standardization, which is very much required when you are into a business. Okay, standardization systems is very important. So we have we should follow some set systems with us, which should help us in managing the entire project. It starts with, as I said, that it starts with listening the project, listening not only by ear but also jotting down that what all are their requirements. So सबसे पहले तो आप उनका लाइफस्टाइल समझिए. लाइफस्टाइल के बेसिस पे अब आपको एक जो स्पेस दी गई है, you have to fit in their requirements. You are making the space not for yourself, you have to making the space for your client. Okay. फिर आप उसमें लिखिए कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं. देयर आर 3 थिंग्स, विच इज़ वन इज़ नेसेसिटी, वन इज़ योर कम्फर्ट एंड वन इज़ योर लग्जरी. सबसे पहले नेसेसिटी उधर उस स्पेस में ख़त्म होनी चाहिए. ठीक है. फिर उसके बाद आप स्विच ओवर होइए कम्फर्ट्स क्या हैं इस स्पेस के. ओके. फिर देन लास्ट में अगर जगह बच रही है, देन यू शुड स्टार्ट गिविंग द लग्जरियस एलिमेंट्स इनटू द स्पेस. सो दिस इज़ हाउ यू क्रिएट अ हायरार्की. यू फर्स्ट फिनिश ऑफ कट ऑफ योर these hierarchies, and then I think most of the time purpose solve हो जाता है सारे ही प्रोजेक्ट्स का, सारे ही क्लाइंट के रिक्वायरमेंट्स का, और विद द गिवन स्पेस, चाहे वो बड़ा स्पेस हो या छोटा स्पेस हो. अगर हम ये फॉलो करते हैं ये फ्लो को, तो ऑटोमेटिकली वी गेट द आइडिया कि स्पेस का बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसे हो. कभी किसी क्लाइंट ने आपको बुला के, या आपके पास में कोई क्लाइंट आया और ही सेड कि नेहा जी ऐसा है दैट ये प्रोजेक्ट है ना, हमको ये करना है, दिस इज़ व्हाट आवर विजन इज, है ना, एंड यू नीड टू क्रिएट दिस. ठीक है, फंड्स का कोई इशू नहीं है ना. तो आपने ऐसी कौन सी चीज़ क्रिएट करी? आई वांट टू नो दैट. लाइक तो कभी हुआ ही नहीं कि फंड्स का कभी इशू ही नहीं है. दिस इज लाइक वन ऑफ द ड्रीम्स काइंड ऑफ थिंग, लाइक अ मास्टरपीस दैट यू हैव क्रिएटेड. हाँ, बट आई थिंक आई विल से अदर वे अराउंड. Something close to this any time? No, I say that challenges जब जहाँ आते हैं ना, जहाँ limitations आती है ना, वहाँ पे you become all the more creative. I like to have those restrictions of the space, those restrictions of like बीच में suppose आपके कॉलम ही क्यों आ गया. एक हमने रूम बनाया, उसमें एक बीच में कॉलम आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा तो कैसे, we should be, it should not look a sore, it should come out as one of the hero of the thing. So we try that whenever we are getting such limitations, we try to convert it into masterpieces or the heroes of that space. So
आई मीन बहुत सारे ऐसे केसेस आए जब हमारे सामने कुछ ऐसी सिचुएशंस आई कि हम लोगों को लिमिटेशंस था वहाँ पे, स्पेस वाइज लिमिटेशन, बजट वाइज लिमिटेशन और द क्लाइंट रिक्वायरमेंट वाइज लिमिटेशन. बट देन क्या होता है कि जब आपके पास टाइट सिचुएशन होती है ना, लेकिन तभी भी आप जब आउट ऑफ बॉक्स सोचते हो तो वो जब चीज़ निकल के आती है, दैट इज़ व्हाट कॉल्ड द क्रिएटिविटी. क्योंकि आपके पास अगर ऑलरेडी एक एबंडेंस है, एक भरपूरता है, तो आप कुछ भी अच्छा बना लोगे. बट जब नहीं है उसमें जब आप एक अच्छा एक एक मास्टरपीस लेके आ रहे हो, सो दैट इज़ व्हाट कॉल्ड द क्रिएटिविटी इज. सो वी हैव डन सच प्रोजेक्ट्स वेयर इन either the furnitures or the rooms or even the structural elements, we have converted the challenge into some masterpiece or some hero thing. सबसे महंगा प्रोजेक्ट अब तक आपका कौन सा रहा है? सबसे महंगा प्रोजेक्ट? Yes. That is we are doing one villa currently. Okay. That's and I think duration उसकी काफ़ी हो चुकी होगी. So generally villas, the architecture and designing goes parallelly. So it's like we are the collaborators, the architect, the landscape designer, the project manager, the designer, the interior designer and the clients. They are the collaborators. तो इन सबको प्रोसेस करते करते ही वो 2 साल 2.5 साल 3 साल निकल जाता है एक विला प्रोजेक्ट में. But then the digits are very high. Approximately multi crores. Okay. I would say 2-digit crores. Okay. So that is the interior 20-30 crores, 50 crores. Approximately. Yes, so approximately you can say it is around 15 crores. 15-20 crores. Yes. Okay. And अब हम बात करते हैं सबसे लोएस्ट बजट प्रोजेक्ट की. हाँ. जो आपने अब तक हैंडल करा है. लोएस्ट बजट प्रोजेक्ट. हाँ. लोएस्ट बजट स्टार्टिंग में होगा आपका. हाँ. So lowest budget I would say जब मैंने किया तो 3,000 रुपये का आई हैड टू डिज़ाइन, आई हैव टू डेकोरेट फॉर बर्थडे. ओके, दोज वर बर्थडेज, दोज वर माई इनिशियल प्रोजेक्ट्स. जब मैं मुंबई में जब नया नया डिज़ाइनिंग किया, कोई जानता तो था नहीं. नोबडी वाज. बहुत इंटरेस्टिंग बात बताइए आपने. कोई कॉन्फिडेंस ही नहीं था किसी को कि मैं कुछ कर पाऊंगी, बिकॉज आई डेंट हैव एनीथिंग इन माई पोर्टफोलियो टू शो देम. ओके, सो देन इट वॉज, एंड आई वॉज नॉट हैविंग एनी पर्सनल कनेक्शंस हियर. तो मुझे क्यों कोई काम देता. तो कहीं ना कहीं से जो फ्रेंड्स थे कुछ था ऐसे ही, मैं आउट ऑफ एंथुसियाज्म कि चलो मैं कर देती हूँ. सो हार्डली आई वाज जस्ट रिसीविंग मनी फॉर माई ट्रैवलिंग एंड ऑल. देयर वाज हार्डली एनीथिंग गोइंग इन माई पॉकेट, बट जस्ट टू प्रूव माई सेल्फ इन द इंडस्ट्री. देन आई स्टार्टेड दैट ओके चलो ठीक है, कुछ तो मिल रहा है ना करने को. तो उसमें क्या करते थे बर्थडे प्रोजेक्ट्स में? लाइक बर्थडे सेलिब्रेशंस कुछ नहीं, कुछ मतलब आई यूज्ड टू गेट व्हाटएवर लोकली अवेलेबल मटेरियल्स देयर. देन आई यूज्ड टू drape something and I used to make it aesthetically very interesting. So those were my initial projects. Then slowly and gradually थोड़े stage स्टाइलिंग और आने लगे. लाइक दिवाली के टाइम पे कैसे जो ज्वेलरी शोरूम्स होते हैं, कहते डेकोरेशन थोड़ा बहुत होता है. सो दैट स्टार्टेड विथ कपल ऑफ प्रोजेक्ट्स विद दैट. एंड देन माई फर्स्ट ब्रेक was given by one of my friends in Delhi. He was the gym owner then. So first project was 800 square feet of gym what I had designed in Delhi, Gurgaon. And फिर वहाँ से, and we have a very beautiful history of having beautiful relationship with the clients. तो उनके साथ हमने 3 साल, उनका 3 साल बिजनेस चला. उन 3 सालों में we have created 5 of the gyms with them. And likewise now also if I say with this journey, कुछ ही नंबर ऑफ क्लाइंट्स हैं हमारे पास, बट उनके मल्टीपल प्रोजेक्ट्स करते हैं. बिकॉज दे नो दैट काइंड ऑफ सर्विस व्हाट वी आर गिविंग, द काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, वी आर वेरी क्वाइट रिस्पॉन्सिव with our things, and then technically understanding, aesthetically beautiful. With that, with few set of clients, we are doing slowly and gradually better. So that was the journey. Wow. बट सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट आज तक इस हाउस एंड कार्ड पॉडकास्ट में जो रही है ना, दैट इज़ जो आपने अभी बताई, दैट योर जर्नी स्टार्टेड फ्रॉम डिज़ाइनिंग ऑफ बर्थडे सेलिब्रेशन. हाँ, यस, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है. ये तो आई डोंट थिंक एक्चुअली कुछ ऑप्शन नहीं था ना मेरे पास. जब आपके पास कुछ ऑप्शन नहीं होता तो यू आर डेस्परेट टू डू समथिंग, राइट? एंड व्हेन यू आर पैशनेट एंड यू आर डेस्परेट, यू वांट टू शो वर्ल्ड योर
योर स्किल्स इन यू, आपको छोटी सी भी अपॉर्चुनिटी मिलती है ना, उसमें भी ऐसा लगता है कि वाओ, मतलब आई मीन व्हाट अ थिंग आई हैव रिसीव्ड, लेट्स डू दैट. सो दैट वाज अ पैशन देन. पैशन तो है, बट आई थिंक दैट वो आपकी विल पावर ही होगी, बिकॉज इतना मतलब सीरियसली मैं बोल रहा हूँ, मतलब लाइक सीरियसली हैट्स ऑफ कि कोई भी अगर होता तो वो है ना, शायद इंटीरियर डिज़ाइनर का इंटर्न बन जाता जनरली जो होता है. ठीक है कि भाई काम सीखना है, बट रिलेटेबल ही. So I wanted to learn. I would not suggest this to the future plans into designing, that this should be the path. I couldn't continue my experience under some seasoned or experienced designer because I was a new mother then. I couldn't take out special time away from the child to put my few hours each day into the job. But then बहुत बहुत ज़रूरी है हमको एक्सपीरियंस लेना. एटलीस्ट 4-5 साल का तो एक्सपीरियंस होना चाहिए. बिल्कुल. विद फ्यू सेट ऑफ लर्नड डिज़ाइनर्स, एक्सपीरियंस डिज़ाइनर्स. जब आपको लगे कि आपने उनके अच्छे स्किल्स को अडॉप्ट कर लिया है, उनसे सीख लिया है, एंड ऑलवेज कीप देम एज मेंटर. इट्स नॉट लाइक दैट यू आर कटिंग ऑफ फ्रॉम देम और यू आर कटिंग देयर बिजनेस. ऑलवेज कीप देम एज मेंटर. Approach them whenever you want to have the help, when you are actually getting into the market. तो आप हमेशा उनको अप्रोच करके और एक बार सीखने के बाद फिर आपको मार्केट में उतरना चाहिए. सो आई वुड लाइक टू आस्क यू दैट जब भी कोई एक प्रोजेक्ट आप डिज़ाइन करते हो तो व्हाट इज़ द काइंड ऑफ स्टाइलिंग दैट यू प्रेफर, दैट यू यूज़, प्रोडक्ट्स या कोई भी एलिमेंट्स जो वहाँ पे प्लेस्ड होते हैं? बिकॉज हम काफ़ी सारे जगह जब हम जाते हैं सो वी फील कि ये यहाँ पे इस वॉल पे कितना सुंदर लग रहा है, ये फर्नीचर कितना अच्छा लग रहा है, इसकी प्लेसमेंट कितनी अच्छी है. तो व्हाट इज़ योर स्टाइल ऑफ डूइंग थिंग्स? So styling is one of my favorite topics. Yes. I myself is a stylist. I believe the styling is the soul of the project, which makes the space accepted by all or accepted by mass. मतलब आप it makes the project complete. In fact, I would say आप कितना भी functionally strong बना लोगे project को, technically fool proof project होगा. आप एस्थेटिकली उस पर बहुत अच्छा बेड डाल रहे हो, सोफाज डाल रहे हो, टेबल्स डाल रहे हो, आर्किटेक्चरली उसमें एलिमेंट्स बहुत चल रहे हैं, बट देन इफ दैट इज इन that is not fulfilled with right products that of your lighting. I'm talking about accent lighting. Okay. Some accent artifacts, accent furnitures. Even furnitures are made like those are lesser functional, but that is more of the aesthetic part as an accessory that is required. The rugs are required. The fabrics what we are using. So these are also a part of styling, and without which any project is incomplete. वो उसमें एक ना जान डाल देता है जब आप एक स्टाइलिंग करते हो, जब आप वहाँ पे एक वॉल पे जाके एक दैट स्पेशल ह्यूज साइज आर्टवर्क भी टांग दोगे, प्लेन वॉल होगा, दैट वॉल विल स्टार्ट स्पीकिंग यू. एक ब्लैंक टेबल है बड़ी सी आपने डाली है, उस पर यू जस्ट कीप अ वाज, प्लेस लॉट मेनी फ्लावर्स इनटू इट, द स्मेल, द फीलिंग ऑफ दैट मेक्स द स्पेस स्टाइलिस्ट. सो आई बिलीव स्टाइलिंग इज अ वेरी वेरी इंटीग्रल पार्ट of the design process, which is the first and foremost impression when a person's enter that space. स्टाइलिंग में लाइक ऐसे कौन से ब्रांड्स हैं जिन पे आपको लाइक ट्रस्ट है, लाइक इफ यू आर डूइंग सो आई विल डू ओनली गो विद दीज ब्रांड्स? Okay, there are multiple brands. Yes, of course. Okay, there are multiple international brands, homegrown Indian brands. अब तो इंडिया में इतने टैलेंट आ गया है कि everybody has got best of the skills. Best of the skill was already there, but the production skills were somewhere missing. The machineries were missing. Techniques were missing. तो अब तो इंडिया में वो सब भी इतना कुछ available है that India has very beautiful homegrown brands. स्टाइलिंग में जब मैं ब्रांड्स की बात करती हूँ तो स्टाइलिंग इज़ अबाउट मल्टीपल प्रोडक्ट्स एंड लेयरिंग ऑफ मल्टीपल प्रोडक्ट्स. तो स्टार्टिंग विद द
upper level, which is the lighting, Right. which is, I'm not talking about the technical lighting or the architectural lighting. This is about the accent or the mood lights through your accented pieces, which is giving you the light effect also to accentuate your mood, and which is also aesthetically very interesting. So उसमें मुझे मैं बोलूँगी Mother Gone Mad is one of very custom made designer, light designer. Kirti Jalan is one. Okay. And then I'm a lot into cultural style, Indian cultural style. So Force Lighting, Kaleido Lighting is one. So these are very good brands. We can go for lighting. Thank you. Talking about the mid-level, when you have those table accents or the floor accents, I would say Pottery Barn, West Elm, these are international brands. But when we talk about Indian brands, there are multiple. I mean, if we see the great designers are now converting into the stylist pieces, producers also. Talking about Ashisha products, talking about again Kirti Jalan products. Vicar Story is the one. Okay. So they are beautiful. They create beautiful pieces. They also custom made for you. They also create their own standardized pieces. So they are I'm very fond of them. There are few furniture accents which are now these days used as accessory more than the functional purpose. Talking about Scarlet Splendor, again Ashisha, then we have Vikram Goyal, Okay. then Nitish Arush. I mean, so many brands now in India. So these are there. At the lower level, at the ground, on the floor, rugs plays a very important role. Of course. Okay. That again adds on the layer to your beautiful marble or tile or whatever, the stone, whatever you have used. The styling is all about layering. And rugs plays a very important role. Jaipur Rugs is the one. Obiti is the one. And yes, so these are my few favorite brands. There are multiple brands which are also very good or equally good. But then I've been more fond of, little more inclined for these brands. आपका जो एक फेवरेट ब्रांड है इन रग्स, जयपुर रग्स, वो हमारी सिटी से ही है. Yes. एंड दे डूइंग समथिंग अमेजिंग वर्क. वी हैव सीन देयर वर्क. तो पूरा जिस तरीके से वो पूरा बनाते हैं, डिजाइन करते हैं, It's not something they are doing a lot. They were the trendsetters, Yes, of and they course. were the one who got the importance for the rugs in the country. They were the pioneers, I would say. Yes. And but yes, I mean, though they were the pioneers, they are still the biggest yes. contributor in this rug industry. Yes. But I would say that there are very good brands now, which, like I mentioned, Obiti is there. Loops by Lithika. She's one lady from Lucknow, and the way she has been doing very great work. I mean, very customized and very aesthetic rugs what she made. Coming to the next part, जब भी कोई स्पेस डिज़ाइन होती है, सो डिज़ाइन हो गई, सब कुछ हो गया, स्ट्रक्चर रेडी हो गया, उसके बाद में होता है एक पेंट. Correct. एंड पेंट किसी भी एक छोटी जगह को बहुत बड़ी बना देता है. Yes. और बड़ी जगह को एक छोटा बनाने की हिम्मत रखता है. So true. And whenever you are designing any projects or something, any of the commercial or residential, किस टाइप की पेंट्स या स्टाइल या टेक्सचर का आप यूज़ करना पसंद करते हो? So paints as you mentioned, it's a very, very important aspect for finishing the project. Okay, the finishing makes or breaks the project. Paints holds, I think, majority of the contribution into making the looks of the project. Okay, paints में, yes, solid tones are there. Yes. Trend wise, I would say that the entire world is going towards sustainability. So with respect to the well-being of human, VOCs, low VOCs paints are the one which are in the trend. Every brand, be it Jotun तो बहुत पहले से था, which was focused on low VOCs. Jotun, ICA, Asian Paints, they all are inventing the products which are with low VOCs.
Aesthetically, there's a trend of lime plaster. Okay. So, of course, the how the time comes back, the trends comes back. In fact, the culture comes back. I would say like that. So there were in the old days when we were creating those. घर में हम जब लाइम से एक टेक्सचर देते थे घर पे, टेक्सचर नहीं दिया जाता तो एक्चुअली वॉल्स ऐसी ही बनाई जाती थी. अब वो ट्रेंड बन के आ गया. इट हैज़ टेकन अ शेप ऑफ अ टेक्सचर, दैट टू प्रीमियम टेक्सचर. द थिंग विच वॉज जस्ट फॉर few numbers of countable cost, it is now coming up with the trend with 20 times 30 times the price, and which is actually the trend, and people all over the design industry, not in India, outside India. It was, I think the origin is from India of the lime plaster. It was the traditional method of India to do the lime plaster way, but ab wo all over the world it has become very famous. So that is one biggest trend. Yeah, I think these are the two trends. Rest, I believe in paints, neutrals will always be evergreen. That can never be replaced. Be it your beige, black, browns, greys, whites. These set your background. On top of that, we of course can infuse in many colors to pop up the space or to accentuate the space. And as you rightly mentioned, it's a strategy to place a paint. अगर आपका जगह छोटा है और आपको you want freshness, you use lighter tones. When you want to make the space little luxurious, little cozy, and accent it with many lights into it, you use darker tones. In fact, blacks, dark browns, dark blues are used a lot in the closed rooms, especially in the hotels or some hotel lobbies, or in fact some specialized accent spaces where you use this as one of the strategies. So it all depends what is the context of the space. As per that, you choose the color and you make the space very, very happening through colors. One more thing I like to ask you that अब तक आपकी जर्नी में सबसे अजीब क्लाइंट रिक्वेस्ट आपको क्या मिली है? सबसे अजीब? Yes. एक्चुअली सबसे अजीब तो मैं नहीं बोलूँगी, बट दिस हैपन्स मैनी अ टाइम्स. क्लाइंट्स आर वेरी एस्पिरेंट. उनको चाहिए ताजमहल, बट द बजट शुड ऑल्सो बी aligned with that. We are ready to give that product to you, provided the budget, the price, we are also receiving that right amount of money to produce that. Okay, but their aspirations are very high. तो वहाँ पे वो बहुत अजीब सिचुएशन हो जाती है, हर बार अजीब सिचुएशन हो जाती है. एंड देन वो समझना नहीं चाहते हैं क्लाइंट कभी कभी कि इस बजट में वो चीज़ नहीं बन पाएगी. सो दैट इज़ समथिंग विच इज़ लिटिल अनरियलिस्टिक. ये जो सबसे लास्ट में आपने चीज़ बोली, आई थिंक इस पूरे एपिसोड के अंदर में सबसे ज़्यादा शेयर यही करी जाएगी. और सबसे ज़्यादा इसको जितने इंटीरियर डिज़ाइनर्स या आर्किटेक्ट सुनेंगे ना, वो इसको रिलेट करेंगे कि ये फैक्ट है मैम. नहीं, दिस इज एक्चुअली द फैक्ट, एंड दैट्स अ सैड स्टोरी. दैट I mean, if you're asking for something, you should also be giving that resources to make that, and we are ready to make that. Then फिर आप बोलते हैं फिर डिज़ाइनर ने अच्छा काम नहीं किया. वो चीज़ नहीं होना चाहिए. Thank you so much for coming on our channel for the podcast for this episode. खुराक जी, आपके साथ बहुत मज़ा आया. Thank you. और the housing cart kind of initiative what you have taken, it's of course is very unique in itself. And the best part is कि आप real estate industry से हैं. We are also from real estate industry. तो ये जो एक this also gives a lot of opportunity of collaboration. Okay, and then perhaps your clientele and my clientele are similar. Yes. And with this, this can be a very helpful opportunity as a community to the real estate for the entire real estate industry, and which is very unique to you. I think this is very, very interesting. Thank you so much. And all the best to you with all your aspirations. Thank you so much. Thank you so much everyone for watching this entire episode. In Mumbai, special episode with Kunal Jain signing off from the Housing Cart Show. Thank you.